So, welcome to this live session on the use of algo trading and the decision support system for the portfolio management for the investment decisions. So, as we discussed earlier, इसमें जो भी knowledge I will be sharing after explaining the concepts, मैं आपको directly live market analysis के लिए एक demonstration बताऊंगा and I will tell you the guidance about the how to develop that skill for the portfolio management using the artificial intelligence or using those advanced technical indicators. Like I will be using the spider software, which is the advanced premium technical analysis software, और हम गैन स्क्योर ऑफ 9 जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है स्पेशली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर्स बट इवन फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर रैशनल इन्वेस्टर्स, ये एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है. सो बिफोर वी start, let me tell you, there are two flagship products. One is Iris Plus, other one is Delta Dash. ये दोनों जो products हैं, these use the real-time market analysis to generate the resistance and support breakouts so that you can arrive at your investment decision. So let's see this introductory video of W.D. Gann, William Gann, who developed this innovative feature.
So as you saw that was the biography of W.D. Gann, who basically उन्होंने develop किया था Gann's cure of 9 using, so he did some research, and after doing that research he found that there has to be one scientific way, or you can say mathematical way. Why I am saying mathematical way? Because as you can see, the research he has done, he undertook, was to define the support and resistance levels. It was his work that he combined mathematics, astronomy, all these things, trading psychology, to generate or to in the real time market analysis on the basis एक स्टॉक के प्राइस या कोई भी अंडरलाइंग एसेट है उसके प्राइस के बेसिस पे he generated some levels. तो अब आपको ये थोड़ी सी एक, because some learners may not be from the commerce or finance background, तो एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. जब मैं कोई चीज को बाय करता हूं, so मैं उसको तब सेल करूंगा जब उसका प्राइस बढ़ेगा. So when the price moves upward, उसको हम कहते हैं resistance. So WD Gann provided those resistance levels and at the same time support level. अब मैंने कोई चीज किसी प्राइस पे बाय की, अब उसका प्राइस डाउनफॉल में जा रहा है, प्राइस गिरने लग गया, सो उसको हम कहते हैं सपोर्ट. सो अगर वो पहली सपोर्ट तोड़ता है तो इट मे ब्रीच द सेकंड, थर्ड, फोर्थ सपोर्ट आल्सो, एंड देयर मे बी फ्री फॉल. वाइसा वर्सा ऑन द अदर हैंड, अगर वो रेसिस्टेंस को ब्रीच करता जा रहा है, क्रॉस ओवर करता जा रहा है, दैट मे इंडिकेट अ बुलिश ट्रेंड. सो बेसिकली इनकी जो रिसर्च थी, ही फाउंड दैट जितने भी ये जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, चाहे सॉफ्ट कमोडिटी, चाहे हार्ड कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर, जो भी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज हैं, ही फाउंड दैट इनकी जो भी मूवमेंट है दैट इज इन सिमेट्री विद द मैथमेटिकल शेप्स. चाहे वो एक ट्रायंगल है, चाहे वो एक सर्कल है, चाहे वो एक रेक्टेंगल है, चाहे वो सर्कल की तरह या तो घूम रहा है प्राइस, या तो वो एक अपस्विंग लगाता है और वहां से करेक्ट करके देन इट फॉल्स. So his research, he just back tested his model and he ultimately, इन्होंने एक मॉडल डेवलप कर दिया जिसको हम कहते हैं Gann's cure of 9, and he made all these indicators like Gann angles, Gann fan, Gann square, and he gave some very basic trading rules जो आज की डेट में भी जो एक इन्वेस्टर है वो फॉलो नहीं कर पा रहा है. But if you will follow all these rules, rest assured that you will not only develop skill but also you will able to apply this knowledge. आपकी जितनी भी नॉलेज है आप इसको अपने रियल टाइम पोर्टफोलियो एनालिसिस में इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और आप अपने नियर एंड डियर वंस को भी गाइड कर सकते हैं. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो और दिस प्लेलिस्ट इज एज पर द डिमांड ऑफ माय colleagues और माय नियर एंड डियर वंस, जिन्होंने मुझे ये बोला कि देयर शुड बी सम टूल. बिकॉज आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह देते हैं, वेदर दीज आर FIIs, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और दे आर DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो वो एक बहुत ही आजकल एक ट्रेंडिंग टर्म चल रही है जिसको हम कहते हैं प्रॉप ट्रेडिंग. तो इसका मतलब होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग. प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मीन्स दैट even if I am an financial institution, even if I am a foreign institutional investors, and I am managing the money of my customers, my investors, but that does not stop me कि मैं अपना खुद का पैसा भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ. So for example, if I am XYZ bank and I am managing the funds of my customers, or for that sake even if I am मैं एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडियरी हूँ, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं and I just buy sell their orders as per the SEBI guidelines because I am a member of exchange, and that's it. But that does not stop me कि if I am a stock broker, I am a market infrastructure institution, or I am a stock broker, or I am a bank, or I am anything, as a company मेरे पास जो अपने खुद के funds हैं, I can also invest those funds for trading or short-term investment. I can do that. So this is known as proprietary trading. So proprietary trading में what they are doing is they are using algorithmic trading, or they are using those support and resistance levels. So अभी I hope आप सबको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है. मैंने एक चीज 100 में बाय की,
if it breaches, for example, I'm just giving you example, अगर वो 102 ब्रीच करती just for an example, तो that is the first resistance, तो पूरे chances हैं कि वो 104 पे भी जाएगी. This is just an example, I'm just telling you. अभी इसको हम live देखेंगे using the National Stock Exchange live market data, and we will be using the NSE 100. अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूं for your conceptual clarity. On the other hand, जो चीज मैंने 100 में बाय की थी, it has fallen below, say it has come down to 97. So Gann square may give me the indication, okay, 97 is the पहली support है जो कि breach हो गई है. You may exit or you may sell, you may have a short trade as per the algo trading. So resistance on the higher side, support on the downside. तो ये सारा जो सक्सेस मंत्रा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर ऑल नेविगेटिंग दीज मार्केट मूवमेंट्स विद इन support and resistance. But how I will understand this? So we will be using the tools, we will be using the spider software, and we will be using the artificial intelligence tools for the financial market analysis. और ये जो वीडियो है, this will only help you in learning the skills, how to develop the skill, and it's purely for the educational purposes. But yes, definitely we will be using the, हम publicly available information use कर रहे हैं, which is available for everyone. So after learning these skills, आप अपने आप से खुद independently you will be able to evaluate the stocks. You will be able to make your buy and sell decisions. So I'm sharing one achievement of mine. I got one patent with IP India intellectual property right, where we have formed one device like electromechanical apparatus method for market threshold breach alerts. बहुत सारे आजकल online applications हैं, these are very good, these have their own advantages, but at the same time ऐसा कोई भी before submitting the application for this patent, ऐसा कोई भी device नहीं है कि there is no physical device which can generate the alerts. So this was our innovation basically. Like I'm sitting in my office और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आज वर्ल्ड वॉर हो गया, या फिर आज वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, या फिर आज पॉजिटिव है, वर्ल्ड पीस है. सो इन ईदर डायरेक्शन या तो मार्केट फ्री फॉल में जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में जाएंगे. सो हाउ वुड आई नो दैट? बिकॉज आई एम तो सिटिंग इन माई ऑफिस, आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, या आप भी अपना काम कर रहे हैं. हाउ यू आर going to become aware of the same? So this device will generate an alert on the basis of, say, Gann square. So we have used Gann square of 9 as a prior art for the same. So today, just to give a background, today investors का जो सबसे बड़ा problem है, that is the choice overload. Out of 5,000 companies, you are not, it's not easy, you are not able to screen out which stock to analyze, which to buy, sell, and it has become very difficult for the traditional investment. We all are aware that जो fixed deposits के rates हैं वो बहुत कम आ गए हैं, 6 to 7%, which is even less than the inflation. So there is a less risk is less, but definitely returns are not good enough. So this is the solution. The solution is the combination of mathematics, Gann square, statistics, Gann square, financial market data, publicly information, available information, and technology. Here I'm talking about spider software, plus the trading psychology, that you have to trade as per the market momentum and not become addicted. You have to be very, very disciplined. And it's all, I told you, it's all about resistance and support. Buy above resistance, sell below support, and do it in this live market hour, so that you do not burn your hands if there is any negative news, overnight, or you do not miss out the opportunity if there is a positive news overnight in the ongoing global uncertainty. So Financial Times columnist Robert Armstrong recently coined a term called Trump always chickens out. Like in the evening, world peace, in the morning there is a bombing. So investors are feeling trapped. So how to protect retail traders from this trap? Okay, so hedging is the solution, and also using the artificial intelligence, using the technical software, using the support resistance live crossovers for the trading decisions or the short-term investment decisions. Okay, now I am sharing the
template. Now you can see what we will be doing. First of all, let me show you this spider software, where I will just tell you that how this software works. Okay,